Hi guys, कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन फाइनल टाइम एंड द वीडियो इज हियर। आपने कहा पेपर है सर, पेपर पे फाइनली क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स को छोड़े, कौन से पॉइंट्स करके जाएं फॉर द लास्ट ऑफ प्रिपरेशन। एज अ स्टूडेंट सेइंग सर प्लीज हमारी वीडियो बनाइए लास्ट ऑफ प्रिपरेशन की, ताकि हम इन क्वेश्चन को कर पाए। तो यार ये रहा पेपर का फाइनल प्रीव्यू। आप लोग प्रीव्यू, आई एम सेइंग दिस क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर इन बेसिक्स को फॉलो कर लेते, देन यू गाइस नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स। And those who have started studying just now, they too can get things clear in their mind while they're preparing these questions. Let's start the class. पहला, reading a novel. It is BEGE 108. So इस पेपर में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। छोड़ना क्या, मैंने पहले बोला what to skip, मतलब skip क्या करना है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ एम्पल चॉइस आपके पास, जो मर्जी छोड़ सकते हो, क्योंकि कोई 5 क्वेश्चन करने और 10 आएंगे। यस, 50-50 की पोर्शन है पूरी, कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन कंपलसरी। देयर बी नो सिंगल क्वेश्चन बी अ कंपलसरी क्वेश्चन, यू गाइस कैन चूज एनी 5। so from where to start, the very first thing that comes in mind, that from where to start, how to start, क्या आप किस चीज होंगे, and how we are going to crack this paper. So guys, the very first thing we are having about the novel and introduction, actually it's all about the awakening. The student not being clear with the basic facts, that while on awakening, we guys need to go through by the certain points. So अब इसके दो relevance होते हैं. The first, the novel and the novel are retrospective. I mean adding two things altogether, whether to choose these two or avoiding this and go with just awakening, definitely कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग इन दोनों के जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूं आगे वाले, उनको छोड़ सकते हो, सिर्फ अवेकनिंग को ऑन टिप कर लो, बोल है, एंड देन गो एंड फॉलो द टेल ऑफ टू सिटीज, थिंग्स फॉल अपार्ट, सनलाइट इज ब्रोकन कॉलम पर आजा। यस, ये आपका पेपर कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक की इंट्रोडक्शन। चॉइस एंटायरली आपकी, मैं नहीं कह रहा कि आपको ये फॉलो करना है या ये छोड़ देना है। हाँ, ये जरूर बताऊंगा कि कौन सा इजी है जिसको आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। कम टू द फर्स्ट थिंग, द नॉवल एंड इंट्रोडक्शन। सर यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक है? द एम्बिजेस ऑफ नॉवल आर रिपीट इन इंग्लैंड। द फर्स्ट थिंग जो हमें दिमाग में रखनी है कि नॉवल क्या, उसके एम्बिजेस कैसे हुए इंग्लैंड में, किन बेसिक्स को फॉलो करना था। तो फर्स्ट आ गया द एम्बिजेस ऑफ नॉवल इन इंग्लैंड। एंड नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ नॉवेल्स। सर टाइप्स ऑफ नॉवल में क्या क्या मेरे पास, किन चीजों को क्लियर करना है? द टाइप्स। अब टाइप्स में डायसोपोरा। सो व्हाट इज डायसोपोरा नॉवल? ये डायसोपोरिक नॉवल कौन से होते हैं, हाउ टू डिफाइन देम, किन बेसिक्स को क्लियर करना है आपको डायसोपोरिक नॉवल के अंदर, ये सारा पॉइंट। सर शॉर्ट नोट्स आ सकता है जिसमें आपको कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, थीम, डायसोपोरिक नॉवल सब वन बाय वन होंगे। तो अगर ये आता है तो फ्री के नंबर है। फॉर दैट यू गाइस नीड टू हैव एन आइडिया, वो सारा आपके पास होना चाहिए। एंड देन वी आर हैविंग द कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक एंड द ओरिजिन ऑफ नॉवल। तो ये थे बेसिक्स जो हमें द नॉवल में पढ़ने। अब आते हैं इसके शॉर्टकट पे। मैं इतने सारे पॉइंट्स नहीं कर रहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि यार ये भी करूं वो भी करूं। आई विल गो टू द अवेकनिंग, सी द अवेकनिंग में। शॉर्ट स्टोरी आराम से क्लियर होती, इट्स अ फैमिली स्टोरी, सोसाइटी को हाईलाइट करती है, हर चीज उसके अंदर है। तो मेरे पास पॉइंट्स हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वुमन, या द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वुमन जनरल फेमिनिज्म है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू वुमन को हाईलाइट करेगा यहाँ। एंड देन वी आर हैविंग द इंटेलेक्चुअल सेटिंग्स। यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। Define the intellectual settings in the awakening, how it works, and I'll come to the next one. It's a psychoanalytical point being mentioned in this particular short story. That's the awakening. It's a short story. Novel को short story करो. There's a reason behind it. When you go through the storyline, you're going to get it clear. And then we are having the realism. Actually, the realism को मैं naturalism से compare करके define करता हूँ. पेपर पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ कम टू द लास्ट टू, फेमिनिज्म व्यू और सिंबॉलिक नॉवल। या इट इज अ सिंबॉलिक नॉवल, नो डाउट अबाउट इट। और आई कैन से द लास्ट कमेंट ऑफ द एप्रोप्रिएशन ऑफ द टाइटल ऑफ द स्टोरी, द अवेकनिंग। आई होप आपने सारे पॉइंट लिख लिए, और ये सारे सारे रेलिवेंट हैं यूजर्स, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। जंप टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज द नॉवल आर रेट्रोस्पेक्टिव। जो टॉपिक मैंने यहां और यहां बोले, ये दोनों यहीं पे आ जाएंगे। तो एक ब्लॉक अगर आप शुरू करते हैं, द वेरी फर्स्ट, मतलब मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया,
Why I'm merging these two? That means a novel and introduction and a novel are retrospective. क्योंकि इन दोनों मर्ज करने से पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें कम से कम 3 क्वेश्चंस यहाँ से होंगे इन दोनों ब्लॉक से. Now the choice is yours कि आपने इन दोनों ब्लॉक करने या छोड़ देने. And I promise guys, these are the easiest things that you're going to prepare. And if you're going to have an exam tomorrow, till then, just 4 to 5 hours study is more than sufficient to crack this paper with first division. Come to the point. Here we are having realism and naturalism, I mentioned in Awakening. And then the modernism in literature. This is something that we can see in a concept New Woman. And then the future of modern novel. Again, the future novel is still there. The future of modern novels. And the psychological perspectives. Look at it, I mentioned the psychoanalytical point. And the last, the third world novel. Yeah, this is something new. Just this is something new. ये वो टॉपिक्स थे जो हमें करने हैं from the first and the last block. Now, are you going to do this or you going to skip this? Choice is entirely yours, guys. मैंने पहले बोला this is something we can easily do it. Jump to the next sector. Now here are stories. And when the storylines come, I love to read the stories as it be very easy. ये सारी stories आपको इसी चैनल में मिल जाएंगी. For that, what you need to do, you need to go to and find the video. For that, it's easy to subscribe and go to the playlist and find all this. If you're not subscribed till now, you can subscribe. Or if you don't want, no problem, guys. Just watching. And if you think that it works, then go ahead. Come to the next point. A Tale of Two Cities. What a tool. Sir, A Tale of Two Cities is the story of a woman who's not having a husband. और बाद में पता लगा that he was expired. No, sir, वो तो कहीं था. इसकी वीडियो देखें पूरा तस्वीर क्लियर होगा. यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन का क्वेश्चन कंफर्म है पेपर में. मैं लेडी डेफिस के बारे में नहीं बोल रहा, दोबारा मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं. एंड देन हियर नाउ कैरेक्टराइजेशन, द रोल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. Yes, the role of French Revolution. This is something very important for this particular paper. And then the men, women's affairs. What are men and women's affairs that would be mentioned? ये हमें क्लियर होना चाहिए. उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कैसे कर पाएंगे, एक एक चीज को समझना जरूरी है. This is something very very important, and we guys need to be the master of this. Now jump to the next sector, and that is the personal and political affairs. The personal and political affairs that we mentioned in Tale of Two Cities. Sir, यहाँ पे characterization बहुत important है and appropriation of title. As please write down the appropriation of the title of the story, The Tale of Two Cities. इसको ऑन टिप करना. नहीं हो तो फिर मुझे बताना कि यार ये सर नहीं हो पाया, कैसे करें. Come to the next question. Things fall apart. The easygoing novel, oh I must say, that something that we learn from this particular novel is that how a man survives and the cause of his fall. That we mentioned in the storyline. The things fall apart. The concept of the man, white man arrival. Yes, I must say that white man arrival or the fall of hero. I must say that the fall of hero is the important part. And then here we are having the characterization. सर ये कैरेक्टराइजेशन किसका है? मैं वो हीरो का बोल रहा हूँ, प्रोटैगनिस्ट, या उसके फादर का बोल रहा हूँ, या उसके बेटे का बोल रहा हूँ. तीनों का इंपॉर्टेंट है. एंड नरेटिव, यस. Along with that, one more important part is that the role of woman in the story. This is very limited. They are only subjective in the storyline. तो हमें वो भी क्लियर करना है. And then we are having the appropriation of title. So things fall apart. Come under the title of the story. The things fall apart. Come to the next phase. Things fall apart. मेरी first choice है अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ पेपर की. Second choice है मेरी A Tale of Two Cities. मैं अपनी choice बता सकता हूँ, मैं आपको force नहीं कर रहा. Come to the next one. Sorry, मेरी first choice थी The Awakening. 1, 2, 3. Come to 4. Come to 5. ये मेरी first 5 choice है. 6 दोनों से कोई एक. ये मेरी चॉइस है. मानो सर आपने चॉइस नहीं बताई, मैंने आपको चॉइस बता दी है, अब आपका डिसीजन है आप कौन सी चॉइस लेके चल रहे हैं. कम टू सनलाइट ऑन ब्रोकन कॉलम. द सनलाइट ऑन ब्रोकन कॉलम सर बहुत लिमिटेड है, सिर्फ यही टॉपिक करने, पेपर 100% यहीं से आएगा. तो यहाँ आ गए हम
The notion of patriarchy, yeah, the notion of patriarchy is being mentioned there. The male dominant society. Significance of dreams. Dreams do play a role, a great role. So first I got the notion of patriarchy, and then come to next one, significance of dreams, and then it's a partition novel. Is it the sunlight of the broken column? Yes, we do have a storyline that tells you about the partition and how the things will part out. Important tha, yeah. And then the structure of the novel, और मैं the plot is of the plot. तो characterization का part है, हम कैसे करेंगे ये हमारे important. Now I jump to the next phase, that is पजारा. सब पराजा को अगर मैं समझूं तो पहला तो इट्स अ ट्रैवल नॉवल. सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ट्रैवल नॉवल. द लाइफ ऑफ ट्रैवल पीपल वुड बी मेंशन. अब उसमें क्या क्या चीजें सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं. तो इट्स अ ट्रांसलेटेड नॉवल या इंग्लिश ट्रांसलेटेड नॉवल. उस पर क्वेश्चन आ सकता है. कैरेक्टराइजेशन, द ट्रैवल एलिमेंट, हाँ इंपॉर्टेंट है. एंड द मेजर थिंग, थीम्स. थीम्स पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है. एंड द लास्ट द प्लॉट. प्लॉट से सब कुछ होता है. हम सारा का सारा क्वेश्चन समझते ही प्लॉट के थ्रू है. तो गाइस आई होप दैट यू बी एबल टू क्लियर दिस. कोई प्रॉब्लम होती है, come to me through the comment box, or those who are interested to get notes पीछे इंस्टा आईडी पे लाइक करें या फॉलो करें ताकि आप हर अपडेट को ले पाएं. टिल देन कीप स्टडीइंग, like, share and comment, or subscribe. All the best guys.